So, gimbal, मोबाइल का गिम्बल्स नॉर्मली छोटा होता है so that even a non-camera person can use it. और इसके फीचर्स बहुत सिंपल है दैन दैट ऑफ कैमरा गिम्बल्स. कैमरा गिम्बल्स ज़्यादातर हेवियर होते हैं, इसके लिए आर्म्स लेंथ की ज़रूरत होती है. कैमरा गिम्बल्स को आपको फुल बॉडी आर्मर बना के फिर उसका रिग भी बना के घुमा सकते हो. बट these are very simple, anybody can use this. So दो पार्ट्स में आते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड एंड द बॉडी. Make sure you charge it fully before using it and make sure this is tight. And इसमें लॉक्स रहते हैं, वन लॉक यहाँ पे है, एक और लॉक यहाँ पे होता है और तीसरा यहाँ पे होता है. So just push it open. और as soon as you open, don't try to switch it on. Never try to switch it on. एक बार स्विच ऑन करोगे ये सारा हिलने लगेगा. एंड द मोटर एक्सिस है ना, 1 एक्सिस 2 एक्सिस 3rd एक्सिस, ये हिलने लगेगा तो मोटर खराब हो जाएगा अंदर से. एंड जितना आपने पे किया उसका डबल आपको सिर्फ इसका सर्विस करने के लिए पे करना होगा. एंड देयर इज नो सर्विस सेंटर ऑफ कोई भी गिम्बल यहाँ पे. थर्ड पार्टी करते हैं तो चीटी करेंगे ऑब्वियसली. सो ओपन द ट्राइपॉड, place it on a flat surface, make sure it's a flat surface. ठीक है. और फोन ये से खुलता है, से खुलता है. It's a kind of a clamp. और जो दूसरे गिम्बल आ गए ना, उनमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक पैड होता है. How do you know which side phone up? Okay, I'll show you. इसमें लिखा हुआ नहीं है अभी. नॉर्मली गिम्बल्स में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है दिस साइड फोन अप करके. सभी इसमें है, इसमें मैंने स्टिकर निकाल दिया गया है. इसमें दिस साइड अप करके होगा. दिस साइड अप मतलब कैमरा को इस साइड लगा के रखना होता है. तो anyway, what I was saying that now you get those gimbals, उनके अंदर मैग्नेटिक पैड होता है. ठीक है, आप पहले उसको कैमरा पे चिपका दो, उसको it will snap on. So just place your phone. Make sure it's well balanced. गिरना नहीं चाहिए. थोड़ा सा भी ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए. Very balanced. Even if you are using a camera gimbal too, balance is very important. वरना एक साइड हेवी हो गया तो ये एक्सिस संभाल नहीं पाएगा. If इस साइड ज़्यादा हेवी हो गया ये एक्सिस संभाल नहीं पाएगा. So make sure it's balanced. Once it's balanced, switch it on. How to switch it on? Look at how. This is the power button here. There's a symbol. Long press. ऐसा आ जाएगा. I'll show it to everybody again. तो पावर का एक सिंबल है. So long press on it. Long press. अपने आप एक एक्सिस पे आ जाएगा. Okay. So this is portrait mode. You hold it like this. Okay, you hold it like this. Then open your camera. You can start shooting. But normally gimbal को फ़ोन को इंटरलिंक कर सकते हैं via ब्लूटूथ. तो इसमें मैंने कुछ ऐप डाउनलोड नहीं किया है. सो एक बार डाउनलोड हो जाए वो DJI का मीमो करके एक ऐप है. DJI मीमो करके ऐप है. इट्स ओनली फॉर मोबाइल गिम्बल्स. और कैमरा गिम्बल्स के लिए DJI रॉनिंग करके एक ऐप आता है. आईफोन्स में अगर होगा तो किसी के पास देख लीजिए. एंड्रॉइड्स में APK के थ्रू डाउनलोड करना रहेगा. सो ओपन द DJI ऐप. मीमो करके जो ऐप है वो इसी गिम्बल का ऐप है. इट्स अ फ्री डाउनलोड एंड देन दोनों जो पेयर हो जाएगा उस ऐप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. शो इट. Open the DJI Mimo app, then place it on the gimbal. So अभी make sure the Bluetooth of your phone and इसका भी on रहे. Like when you unbox it, Bluetooth का एक ऑप्शन आएगा ऑन करने के लिए. उसी में अब just ट्रिपल क्लिक ऑन M फिर Bluetooth ऑन हो जाएगा. इसमें फिर कनेक्ट हो जाएगा. So once you open the app, यहाँ पे Bluetooth कनेक्टेड नहीं है करके आएगा. क्लिक ऑन इट, देन ब्लूटूथ का ऑप्शंस खुलेगा. फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट.
So once it's connected, you don't have to touch your phone whatsoever. Zoom in करना है, यहाँ से होता है. If you have to turn the axis, use the joystick. Up, down, everything. Record करना है, the red button. If you have to turn this over to landscape, double tap M. Double click that button for the next click. And make sure one of your fingers is on this button. Okay? What does that button do? Okay, I'll tell you. So this button is for the balance of three of the axes. So अभी इसको आप घुमाओगे कैसे भी, like ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे. So इसमें मोशन सेंसर नहीं है, कहीं पे भी मोशन सेंसर. If there would have been a motion sensor, someone volunteer. He will walk from there towards here. Suppose the camera is on, the recording is on, and the motion sensor is already fit on this. The camera would have tilted towards his side, like this. So we cannot use that, because there is no motion sensor in this. How to use this is, the index finger on the first button, hold the other part of the handle, hold the other hand here, just for the stability. Okay. Suppose अभी सर्च को शूट करेंगे हम. Okay. So you can tap here and change the resolution or any camera aspect ratio, up to you. आपको कैसे चाहिए. हाँ. So now this is in the basic camera, not 0.5 or ultra zoom or tele-lens. Okay. Suppose you want to zoom in, just click on this, it will zoom in. There's a side button. साइड बटन है यहाँ पे. नए मॉडल्स में यहाँ पे ऊपर आता है, इट्स अ टच सेंसर. Once that is done, you can tap up to your preference if you want it as landscape. Like zoom in, zoom out. So basically ये as this is a very basic model, you can turn it however you want to. The newer models are usually controlled by joystick. That is, once it is like this, position like this, I can't go like this and it will not automatically change. This side. Yeah. So what you'll have to do, hold this with the joystick And move on it. the other hand, take it this side, then move the joystick towards the angle you want to capture. अभी ऐसे पकड़ा मैंने, हाँ. ऐसे जाऊंगा ऐसे ही रहेगा. हाँ. अभी मैंने पकड़ा नहीं, जस्ट सी घुमाया मैंने, कैमरा भी घूमेगा. So that locks it. That's locks it. But in the newer versions, since we do not need to lock it, does that button still exist? Okay. This button will always be there on a gimbal. The camera gimbal, the mobile gimbal, any gimbal, even a rig. Okay, because this is very necessary for the handycam or any like motion tracking Agreed. videos, whichever you are going to shoot. अभी आपने joystick use करके इसको घुमाया है, and you want to bring it back into the normal position. Double click on it. अपने आप आ जाएगा. Okay, and So that's what that button does. Bring it back to the normal level. and lock the position also. It's basically the trigger of the grip. Right. I'll show you it. Show it to you again. Moving. The camera 2 moves. Now what will I do? I'll just hold it and lock it and move it towards this side, but it's showing the same frame. You can also turn it like this by clicking on it. Never not click and do it, because axis खराब हो जाएगा. What's the purpose? Purpose is we have to take low angle shots. Supposing somebody is walking, you have to track along the feet and then come up. So it will give you many movements, tracking along the feet, crane up, and then you can take dramatic shots. So I just turn the gimbal, okay, by locking onto it. I can record a footwork of a guy, take it to a right angle. Anyhow, I can use it because the whole axis is free. If I only want to lock onto his foot,
press the axis here. There's the button here. Take it along his footwork. It will only take his footwork. I wouldn't be able to get it back to a wider shot if I want to. If I have to do that, track it to his leg, then leave the button, take it to a wide angle, or however you want. So anyway, the fact remains that you must have this in your kit. It's not very expensive. कितने का आता है? ये 8,000 का नया मॉडल सेकंड हैंड में 3-4 हज़ार में मिल जाएगा. That is hardly. But it will make your camera so versatile. The kind of things your camera can do, it's amazing. Make sure you lock this. Also show them the 3 axes. कौन सा axis है? Anywhere you see round, it's axis. Round, axis. Round, axis. ये round है, ये भी axis है. And there are motors in there, yeah. Okay? इसके अंदर motors होते हैं जो वो delicate होते हैं. You first put it off and then you hold it. Right. Yes. Never not put a phone and on it. If you You even turn it off Yeah. and then you take off the phone. Yeah. Turn it off, then remove the phone, Right. then do all this material. Yeah, because otherwise all the joints are powered. They will try to resist it. That and basically it's about the weight. so that बंद करके दिखा दो. It's basically about the weight. If there is no counterweight, then the motors can't counter it to something. तो इसलिए वो उनकी alignment goes off. the lock thing, make sure you're positioning it properly. You see this? ये सभी gimbals में आता है, except camera gimbals. सभी phone gimbals में आता है. Make sure you align it, then bend it towards it. यहाँ पे आपको एक क्लिप दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा स्विच दिखेगा. So align it, bend it over, then click. It's done. It doesn't move. This doesn't move. Okay, it doesn't move. This doesn't move. Then it's locked. Okay. Then dismantle it if you want or if you don't want to. It's up to you.